Please welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. आज 29 जुलाई मेमोरी बेस्ड पेपर देख रहे हैं केमिस्ट्री का. द फर्स्ट क्वेश्चन, 20 grams of nitrogen and 5 grams of hydrogen react according to this following reaction. N2 plus 3H2 gives to NH3. Haber's process वाले reaction दिया है. Then which reactant act as limiting reagent and find number of moles of ammonia formed. ये पूछा है. ये तो मोल कॉन्सेप्ट की है. इसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 20/28, 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन दिया है, सो 20/28 मोल्स है. 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है, सो 5/2 मोल. एंड नाउ इन दिस द लिमिटिंग रेजेंट इज नाइट्रोजन. सो गिवन मोल से हम लिमिटिंग रेजेंट फाइंड कर रहे हैं. सो लिमिटिंग रेजेंट क्या होगा? नाइट्रोजन. अब इनके हिसाब से हम प्रोडक्ट की मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे. देन द प्रोडक्ट मोल्स विल बी 2 × 20/28 मोल्स होगा. अब मोल्स ऑफ अमोनिया इज 20/14 एंड इट कैन बी इक्वल टू 1.43. अब इसमें आपको ये पूछा है limiting reagent and number of moles. So nitrogen and number of moles of ammonia formed is 1.43 moles. Next question, this is from coordination compounds. इसमें ये मेंशन किया है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3-. CN- is the strong field ligand, so obviously it will form inner orbital complex. और इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -x डेल्टा नॉट दिया है और x फाइंड करना है. इसमें हमको ये भी दिया है पेयरिंग एनर्जी को नेग्लेक्ट करने का. ठीक है. इन दिस कॉम्प्लेक्स आयरन is in the +3 state and its configuration is 3d5 outer configuration. and CFT में ये T2G 221 and EG 00 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा. क्यों? इसमें d ऑर्बिटल्स में T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में फिलअप हो जाएगी एंड उसके बाद EG में. सो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये T2G में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिलअप हो गया. दैट इज 2 to 1. EG orbitals are vacant. So the configuration T2G 2 to 1 EG 00. Now crystal field stabilization energy for octahedral complexes हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? -0.4 n T2G, that means number of electrons in the T2G orbitals, plus 0.6 n EG, that means number of electrons in EG orbitals. Now plus NP, this is the pairing energy. लेकिन हमको पेयरिंग एनर्जी नेग्लेक्ट करने के लिए कहा था, सो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे. नाउ नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स 5 है, सो -0.4 × 5 प्लस नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स 0 है, सो इट विल बी इक्वल टू -2 डेल्टा नॉट. और इसको हमको दिया है -x डेल्टा नॉट के टर्म्स में, तो x वैल्यू हो जाएगी 2. Next question, this is from S block elements. On heating, lithium nitrate and sodium nitrate product formed are respectively. This is the direct question, easy question. When lithium nitrate undergoes decomposition, it gives lithium oxide and nitrogen dioxide. When sodium nitrate undergoes decomposition, it gives sodium nitrate and oxygen. Sodium nitrate and oxygen. So यहाँ given options में हमको lithium oxide and sodium nitrite दिया है. So this is the answer now. Next question. In 100 ml of 5% weight by volume NaCl solution in water, egg albumin is added. Then which of the following is correct? ये तो आपके लैब मैनुअल से दिया है ये क्वेश्चन. When NaCl 5% weight by volume NaCl is added to this solution, if egg albumin is added, then लियोफिलिक सोल इज obtained. लैब मैनुअल में आप लिखते होंगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन
फॉर्मेशन के बारे में. सो व्हेन egg alumin is added to 5% NaCl solution, then you will get lyophilic salt. Next, in alkaline or neutral medium, KMnO4 oxidizes S2O3 2- 2 SO4 2-. और इसमें find the change in oxidation state of Mn in the reactant and product. MnO4 minus oxidation state is +7 और product में ये MnO2 बनेगा in presence of neutral or alkaline medium. Then it is in MnO2 +4 oxidation state. So change in oxidation state is 3. So answer is 3. Next one, ionization energy of sodium, magnesium, silicon are given 496 kilojoule per mole, 738 and 789. Then the possible value of ionization energy of aluminum. Sodium outer configuration is 3s1, magnesium 3s2, aluminum 3s2, 3p1, silicon 3s2, 3p2. From left to right usually ionization energy increase होता है, लेकिन इसमें magnesium and aluminum में magnesium is having completely filled s orbital configuration, whereas aluminum has incompletely filled configuration. So इसकी वजह से इसमें aluminum से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी यूज हो जाएगा when compared to magnesium. So the order of ionization energies can be sodium less than aluminum less than magnesium less than silicon होता है. This is the first ionization energies order. And now for aluminum the ionization energy can be in between sodium and magnesium values. So that is 496 और 738 के बीच में होगा aluminum का ionization energy. So इसके given options में आप देख सकते हैं ये 578 किलोजूल पर मोल is in between sodium and magnesium ionization energy values. That is 496 and 738 के बीच में होगा. Next question. In the reaction of zinc with excess of alkali formed product is. This is from S block again. S block में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टी से एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक रिएक्ट हो गया तो तब पहले ये ZnOH4 2- बनेगा एंड it is converted into sodium zincate. So in the sodium zincate the ion is ZnO2 2-. So this is the answer. Now this is a question from chemical kinetics. इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड इसमें डेटा प्रोवाइड किया है और इसमें एन वैल्यू एम वैल्यू इनकी रेशियो हम कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ एम एंड एन. इसकी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट इक्वल टू के इंटू एक्स पावर 1 वाई पावर 0. ये हमको डेटा प्रोवाइडेड है, इसके हिसाब से हम रेट लॉ लिख रहे हैं. और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 इसमें हम डेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं के इंटू 0.1/n एक्स की वैल्यूज एंड रेट सब्स्टिट्यूट किया है 2 इंटू 10⁻³ बाई 4 इंटू 10⁻³ ऑन सॉल्विंग n वैल्यू आ गई आपको 0.2. एंड सिमिलरली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स 1 एंड 3 इसमें एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 को लेके हम सॉल्व किया तो इसमें m वैल्यू मिल जाएगा, m वैल्यू आएगा 8. नाउ द रेशियो ऑफ m एंड n विल बी इक्वल टू 40. दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the following, identify correct set of species in which one species is odd electron and another species is expanded octet species. और इसमें NO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, 7 + 8 15 दैट इज ऑड नंबर, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी NO. और नेक्स्ट इसमें हमको H2SO4 सल्फर is having
more than 8 electrons. That means expanded octet. It is having more than 8 electrons. So H2SO4 में सल्फर वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं, इसमें there are 6 bonds. That means 12 electrons in its valence shell. So expanded octet is observed in case of H2SO4, and in the remaining you can't observe odd electron species. So the answer is 1. एक्सपैंडेड ऑक्टेट तो H2SO4 भी होगा, SF6 और PCl5, लेकिन आर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो केवल NO ही होगा. तो इसलिए आपको ये गिवन ऑप्शंस में फर्स्ट वन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 gram bromine on reaction with propane gives 1122 tetrabromopropane with 20% yield. Then mass of the product formed is x into 10 power minus 1 gram. The value of x is, इसमें CH3 C triple bond CH propane when reacts with bromine it gives 1122 tetrabromopropane. Now we are calculating the mass, it is 1 gram. So number of moles are 1 by 160, and from 2 moles we are getting 1 mole. That means 1 by 160 से हमको इसमें आधे moles मिल जाएगा. That is 1 by 2 into 1 by 60. लेकिन इसमें product is 27% yield. That means into 0.27 होगा. 27 by 100, that is 0.27. Now the weight of the product, these are the number of moles, and we are calculating weight of the product by multiplying with molar mass. Molar mass of this product is 360, then you will get 0.3 gram. और ये 0.3 gram को सम x इंटू 10 पावर माइनस 1 के टर्म्स में लिखा है, सो x वैल्यू हो जाएगी 3. ये भी इंटीजर टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गैंग? गैंग इज नथिंग बट कंटामिनेशन ऑफ एर्थी मटेरियल इन द ओर. सो ये मेटलर्जी में हम पढ़ते हैं. मेटलर्जी में गैंग मतलब कंटामिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड और earthy material present in the ore. So this is said to be the gang. Gang को हम gang को remove करके concentrated ore बनाएंगे. Next one. This is from ionic equilibrium. Solubility product of PbS is given, that is 8 into 10 power minus 28, and solubility of lead sulfide is dash into 10 power minus 16 molar. So PbS AB type salt है. So इसमें KSP equal to S square. इसमें S calculate करना है. KSP is given as 8 into 10 power minus 28. Now S equal to root over 8 into 10 power minus 28. It will be equal to 2 root 2 into 10 power minus 14. Now root 2 value is also given in the problem. So substitute 2 into 1.41 into 10 power minus 14, then you will get 282 into 10 power minus 16. So यहाँ ये वैल्यू पूछा है x into 10 power minus 16 टर्म्स में. So x वैल्यू यहाँ हो जाएगा 282. Next one. This is a question from ionic equilibrium. Enthalpy of neutralization of strong acid with the strong base is given minus 13.7 kilocalories. Then find rise in temperature when 400 ml 0.3 molar NaOH solution is mixed with 600 ml 1 molar HCl solution. Sorry, this is thermochemistry का है. इसमें enthalpy of neutralization से related. So when strong acid, strong base react with one another, it gives salt and water. अब इसमें NaCl के साथ H2O भी बनेगा, और enthalpy of neutralization is usually minus 13.7 kilocalories. अब इसमें मिलीमोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं. मिलीमोल्स फ्रॉम द गिवन डेटा, दैट इज 400 ml 0.3 मोलार NaOH एंड 600 ml 1 मोलार HCl. सो इससे हम इसकी मिलीमोल्स कैलकुलेट किया है. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी 600, एंड फॉर NaOH इट इज 120. इसमें लिमिटिंग रेजेंट इज sodium hydroxide. So it is completely consuming, and according to sodium hydroxide
the product formed, that is NaCl formed is 120 millimoles and 0.12 moles बनेगा. और ये 0.12 moles के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर 1 मोल इट इज -13.7. फॉर 0.12 mole enthalpy of neutralization is, by multiplying this you will get -1.644 kilocalories. Delta H equal to ms delta T. इसमें enthalpy is 1.644 into 10 cube into 4.2 जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 4.2 से मल्टीप्लाई करके. क्यों? हमको स्पेसिफिक हीट दिया है वाटर के लिए 4.2 जूल पर ग्राम. This is equal to 1000 into, that is 1 liter solution के लिए mass 1000 into 4.2 into delta T. Now delta T value will be, on calculating you will get 1.644. Now if you round off this you will get 1. Oh, sorry, it is 2. 1.644 na, so when you round off you will get 2. Next question, atom A from atom A form CCP lattice and atom B occupy all the octahedral voids. If the radius of A is 181 pm and B is 100 pm, then edge length of the unit cell is dash pm. इसमें CCP lattice में corners are occupied by corners and face centers are occupied by A atoms. These are A atoms. And edge centers are the octahedral voids position. So octahedral voids are present at edge centers and body center in the CCP lattice. So the edge centers and body center are occupied by B atoms. Okay. Now if you take edge length is, this is the edge length. It is in the FCC lattice. You can observe at the corner these two are the A atoms present at the corners and this B atom present at the center. These are the A atoms and this is the B atom. Now sum of these radii will be equal to edge length. Here radius of the A atom is given 181 pm and it is also 181 pm. Now radius of B atom, edge length कैलकुलेट करना है तो सम कैलकुलेट करना है. इसमें radius of A atom is 181 pm and this is also 181 pm and radius of B atom is 100 pm. So 2 into 100, this will give you the diameter of this B atom. Now if you add these you will get the edge length. This will be equal to 562 pm. Aqueous solution of which set of ions is colorless? This is from D block. इसमें scandium 3+, Zn2+, Mn2+, titanium 2+, Cu2+, titanium 3+, Cr3+, and Zn2+ is given. To show the color, the ion should have unpaired electron in the aqueous solution. So unpaired electron जिसमें होगा वो color show कर सकता है, क्योंकि ये डी ट्रांसिशन होने के लिए, दैट मीन्स T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में ट्रांसिशन करने के लिए यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए. सो जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट के ये कलर एब्जॉर्ब करके यहाँ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल को
जंप करेगा और उसको कहेंगे डी ट्रांजिशन, और हायर एनर्जी से व्हेन इट कम बैक्स इट एमिट्स दैट लाइट एंड दैट विल शो द कलर। एंड इसमें स्कैंडियम और जिंक में, यहाँ स्कैंडियम 3+ में ये 3D0 4S0 कॉन्फ़िगरेशन, एंड Zn2+ में 3D10 4S0 कॉन्फ़िगरेशन, Mn2+ में 3D5 4S0 कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देख सकते हैं स्कैंडियम और जिंक में यू आर हैविंग D0 configuration and D10 configuration. When the d orbitals are completely filled and when the d orbitals are vacant, then dd transition is not possible. So to show the color, if there is unpaired electron, then it can undergo dd transition. So in these Mn2+ can show the color, titanium 2+ can show the color, and copper 2+ can show the color because it is 3D9 configuration. Titanium 3+, 3D1 configuration, it is 3D5 configuration, and it is 3D2 configuration. Chromium 3+, it is also 3D3 configuration. Zinc 2+, 3D10 configuration. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो कलर शो कर सकता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर शो नहीं करेगा। क्यों? डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। और टू शो द कलर कंडीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना है। इफ इट इज हैविंग 0 electrons the d orbital are completely filled, then dd transition is not possible. Okay students, that's it for this paper. Thank you.